जय जगन्नाथ प्रिंस दिस बॉस दीपंडा वेलकम टू मास्टर इंग्लिश दुईटा सेशन आमर सरी पिले एटा 3 नंबर सेशन होची बायोलॉजी प्लस टू साइंस पिलांक पई एक्सक्लूसिवली बायोलॉजी बोटनी जूलॉजी तो नो बोटनी तार एमसीक्यू सिलेक्शन क्वेश्चन सेट 8 या पूर्व 17 सेट बोटनी रो 17 जूलॉजी रो हम सारीचे ये होची 8 नंबर सेट बोटनी रो ओके तो जो मैंने जॉइन करुचे फटाफट सांग मान सहित सेयार करदे सब गोटे जिन तुमको कहूँ ये पिले कौन हम सांग मान सहित क्लास करें माने क्लास मजा गोटे निरा नहीं क्लास मजा निरा माने कॉलेज क्लास कला भाया लगे आम जानी भी पार मो सांग के पढ़ुची मुझे पढ़ुची जहाँफल आमको भी जेलस फिल हम मो सांग जब अधिका उत्तर देदेला अरे मुझे पढ़ी मुझे उत्तर देवी नहीं तो सी जहाँ भी स्टार्ट करिया पिले प्रथम प्रश्न कौन double fertilization is the process in plants that includes double fertilization is the process in plants that includes option A syngamy and triple fusion, option B only triple fusion, C development of antibodal cell, D none of the above. Yes जगह आज आर्ट्स रो पॉलिटिकल साइंस क्लास नेक्स्ट अच्छी 9:15 बेलू 9:15 बेलू आर्ट्स पिलांकर पॉलिटिकल साइंस क्लास हम मैराथन क्लास हम ठीक अच्छे तो मोर प्रश्नटा कौन थिला प्रश्नटा थिला डबल फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस इन प्लांट्स दैट इंक्लूड्स ऑप्शन ए सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, बी ओनली ट्रिपल फ्यूजन, सी डेवलपमेंट ऑफ एंटीपोडल सेल, डी नन ऑफ द अबव। किरण कहला ऑप्शन ए सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन ला ठीक उत्तर syngamy and triple fusion double fertilization is the process in plant that includes syngamy and triple fusion option A होची ठीक उत्तर परवर्ती प्रश्न देखिबा क्वेश्चन नंबर 2 कोन बोले unisexuality of flowers presents option A geitonogamy but not xenogamy, B autogamy and geitonogamy, C autogamy but not geitonogamy, D both geitonogamy and xenogamy। प्रश्नटी थिला यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट्स बलांगिरिया कमेडी ऑप्शन सी ऑटोगेमी बट नॉट जैटोनोगेमी राइट आंसर पिला हाँ राइट आंसर होची ऑप्शन सी इट इज व्हाट ऑटोगेमी बट नॉट जैटोनोगेमी एटा होची ठीक उत्तर ऑप्शन सी चैतन्य यस किरण एटा होची भूल उत्तर परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 3 नंबर प्रश्नटा कोन पिले 3 नंबर प्रश्न होची which of the following shows triploid nature in flowering plants? Which of the following shows triploid nature in flowering plants? Option A, megaspore. Option B, microspore. Option C, embryo. Option D, endospore. प्रश्न टी होची which of the following shows triploid nature in flowering plants? ऑप्शन है मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म कोटा ठीक उत्तर व्हिच इज करेक्ट ऑप्शन 3 रो ए होची मेगास्पोर होची भूल उत्तर ठीक उत्तर होची पिले यस इट इज एंडोस्पर्म ऑप्शन डी एंडोस्पर्म ऑप्शन डी होची ठीक उत्तर व्हिच ऑफ द फ्लावरिंग shows triploid nature in flowering plants ओके ऑप्शन डी एंडोस्पर्म मो पाखे जा उत्तर अच्छे पिले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची दिया हिची दीपक बायोलॉजी रो बोटनी जूलॉजी रो 3 मार्क सिलेक्शन ओहो +3 रो तो प्रीवियस ईयर रो जा अछि देखि दियो हे जीवो क्वेश्चन नंबर आईवी 4 नंबर प्रश्न कोन an allele is said to be dominant if it is expressed in an allele is said to be dominant if it is expressed in option A heterozygous condition only, B homozygous condition only, C both heterozygous and homozygous conditions, option D gametes author कहबी okay so an allele is said to be dominant if it is expressed in option A heterozygous condition only, option B homozygous condition only, option C both heterozygous and homozygous condition, D gametes पप्पुनी कहला ए श्याम करण कहला बी किरण कहला सी बेटा किरण सीटा होची
ठीक उत्तर. So an allele is said to be dominant if it is expressed in both heterozygous and homozygous condition. C होची ठीक उत्तर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखा. क्वेश्चन नंबर 5 पहले. क्वेश्चन नंबर 5 कौन? A percentage of recessive phenotypes in a cross between two hybrid is. आउटर कोच. Percentage of recessive phenotype in a cross between two hybrid is. Option A 25%, B 50%, C 75%, D 100%. कोटा ठीक उत्तर. Percentage of recessive phenotype in a cross between two hybrid is. Option A 25%, B 50%, C 75%, D 100%. लेना क्या ला ऑप्शन बी. ऑप्शन बी होची 50% और 50% होची बेटा भूल उत्तर. ठीक उत्तर होची it is 25%. Option A. Option A percentage of recessive phenotype in a cross between two hybrid is 25%. परवर्ती प्रश्न. What will be the percentage of tall plants with red flowers in a cross between TTR capital smaller into TTRR small? Okay. When T stand for tall dominant and R for red dominant. What will be the percentage of tall plants with red flower in a cross between TTR capital smaller into TTRR small? When T stand for tall dominant and R for red dominants. Option would go 25%, 50%, 75%, and 100%. Go to take. Correct answer होची it is 50%. Option B 50% होची ठीक उत्तर. परवर्ती प्रश्न. Question number 7. Termination codon is. Termination codon is. Option A AUG, option B UGA, option C AAU, option D AUA. Termination codon is. Option A AUG, option B UGA, option C AAU, option D AUA. ठीक उत्तर कौन? ऑप्शन बी होची UGA. AUG विवन्यधव. AUG होची बेटा ठीक उत्तर. ऑप्शन ए टर्मिनेशन कोडन इज AUG. परवर्ती प्रश्न. क्वेश्चन नंबर 8. 8वां प्रश्न. 8वां प्रश्न कोण बरे. 61 codons code for 20 amino acids because of the property. 61 codons code for 20 amino acids because of the property. Option A non-overlapping, B comalesh, option C degeneracy, D wobbling. प्रश्न कौचे author. प्रश्न कौन? 61 codons code for 20 amino acid because of the property. Option A non-overlapping, B comalesh, C degeneracy, D wobbling. कौन ठीक उत्तर पे? ठीक उत्तर होची it is option C degeneracy. परवर्ती प्रश्न. क्वेश्चन नंबर 9. How many ribosomes are required for translation of one molecule of protein? प्रश्न होची how many ribosomes are required for translation of one molecule of protein? Option A 1, option B 2, option C as many codons, option D many. Question repeat करेंगे. Okay. How many ribosomes are required for translation of one molecule of protein? Option would be 1, 2, as many codons, many. ठीक उत्तर होची ऑप्शन ए 1. परवर्ती प्रश्न. क्वेश्चन नंबर 10. An organism used as a biofertilizer for raising soybean crop is. An organism used as a biofertilizer for raising soybean crop is. Option A azotobacter, B azospirillum, C rhizobium, then D nostoc. प्रश्नटी थिला how many ribosomes an organism uses biofertilizer for raising soybean crop is. Option A
Azotobacter, option B azospirillum, option C rhizobium, option D noster. ठीक उत्तर होची it is rhizobium, option C. An organism used as biofertilizer for raising soybean crop is rhizobium. Option C होची ठीक उत्तर. Question number 11. 11 number. The most common substrate used in distilleries for the production of ethanol is. The most common substrate used as distilleries for the production of ethanol is used in distilleries. Option गुड़िक होची corn meal, B soya meal, C ground gram, D molasses. Keshav, welcome to the class. So प्रश्न कौन पिले? प्रश्न होची the most common substrate used in distilleries for the production of ethanol is. Option A corn meal, B soya meal, C ground gram, D molasses. ठीक उत्तर कौन? ठीक उत्तर होची it is molasses. Option D molasses. Question number 12. 12 number प्रश्न. 12 number होची और हिना कहला सी होची ग्राउंड ग्राम होची भूल उत्तर किरण यस 11D. परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12. Ethanol is commercially produced through a particular species of ethanol. It's commercially produced through a particular species of. Option A Saccharomyces, option B Clostridium, C Trichoderma, D Aspergillus. The most common, ethanol is commercially produced through a particular species of, option A, it is Saccharomyces, B, Clostridium, C, Trichoderma, D, Aspergillus. ठीक उत्तर होची ऑप्शन ए SACCHAROMYCS. So Saccharomyces. Question number 13. 13 number question. Which among the following is the primary function of mimicry prevalent in some animals? Which among the following is the primary function of mimicry prevalent in some animals? Option A warning, B concealment, C allurement, D aggression. प्रश्नटी थिला which among the following is the primary function of mimicry prevalent in some animals? Option A warning, B concealment, C allurement, D aggression. ठीक उत्तर होची पिले यस ऑप्शन बी केशव पात्र. यस बेटा यू आर करेक्ट. कैलाश साहू डी होची भूल उत्तर. बी concealment is the right answer. Concealment होची ठीक उत्तर. परवर्ती प्रश्न देखिबा क्वेश्चन नंबर 14. 14 कोन पिले succession in an ecosystem is the result of. Succession in an ecosystem is the result of. Option A occurrence of disease, B changes in grazing habits of animals, C competition among animals, D adaptive ability to environmental changes. प्रश्न आउथरे कहि दउछ. Succession in an ecosystem is the result of. Option A occurrence of disease, B changes in grazing habits of animals, C competition among animals, D adaptive ability to environmental change. Which is correct? The correct answer is it is adaptive ability to environmental changes. Option D adaptive ability. Rina, yes, you are correct. परवर्ती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15. 15 कोन mycorrhiza. Mycorrhiza MYCORRHIZA. Mycorrhiza is an example of. Option A decomposers, B endoparasitism, C symbiotic relationship, D ectoparasitism. Mycorrhiza is an example of. Option A decomposer, B endoparasitism, C symbiotic relationship, D ectoparasitism. 15 रो ए कहला किरण ए होची भूल उत्तर. Mycorrhiza is an example of symbiotic relationship. Option C होची ठीक उत्तर. Option C
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 कौन पिले lichen lichens lichens or lichen what you telling lichens are well known combination of an alga and a fungus where fungus has option A an epiphytic relationship with the alga, B a parasitic relationship with the alga, C a symbiotic relationship with the alga, D a saprophytic relationship with alga. प्रश्न थिला lichens are well known combination of an alga and a fungus where fungus has option A an epiphytic relationship with an alga, B a parasitic relationship with the alga, C a symbiotic relationship with the alga, D a saprophytic relationship with alga. ठीक उत्तर होउची option C when a symbiotic relationship with the alga. Last question of the day आज बोटनी शेष प्रश्न होउची a small fish gets stuck near the bottom of a shark and derive its nutrition from it. This kind of association is called as small fish gets stuck near the bottom of a shark and derive its nutrition from it. This kind of association is called as option A symbiosis, B commensalism, C predation, D parasitism. प्रश्नटी आउतरे small fish gets stuck near the bottom of a shark and derive its nutrition from it. This kind of association is called option A symbiosis, B commensalism, C predation, D parasitism. याकू कौन कहा जाए पे ठीक उत्तर होची इट इज ऑप्शन बी commensalism. This is called commensalism. तो पिले ये थिला बोटनी रो सेट 8 काली जूलॉजी रो सेट 8 देखिबा. See you there. Stay tuned, Master of English. परवर्ती क्लास होचे आर्ट्स पिलांगर पॉलिटिकल साइंस.